everyone. Today we will study about the contract research organization and other topics are also included in it. इसके अंदर और भी है इंफॉर्मेशन है रिसोर्सेज ऑफ ड्रग रिसोर्सेज के दैन इफेक्टिव कम्युनिकेशन है एंड यूड्रा विजिलेंस ये सब भी इंक्लूड होगा आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में. फर्स्ट इन दिस इज द CROs organization means CRO, that is the contract research organization. It is a organization conducted by another company to manage lead company's trials, duties and function. The organization and business contract with CRO do so to acquire scientific expertise without hiring permanent staff. A contract with an outside company means hiring organization which जिसको require नहीं होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफिस में पावर की to run these trial themselves. Type of services which are provided by contract research organization. First one is in project management, database design and build, data entry and validation. Fourth is the clinical trial data management. Fifth is the quality and metric reports, statistical analysis, plans and reports, validation programming. 8 safety and efficacy summaries. Ninth, final study reports. 10th, medicine and disease coding. ये सारी सर्विसेज. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, medical device industry in the form of research services outsourced on a contract basis. It provides such service as biopharmaceutical development, biological assay development, commercialization, preclinical research, clinical trial management, pharmacovigilance. It is more affordable outlet for companies to pursue new medicines, cost-effective solution to develop drugs for for even niche markets. Working with CROs, entry into the drug development has immensely simplified, as the need for the large companies to do everything in-house is now redundant. Support. It provides support for foundation, research institutes, universities, in addition to government organization, National Institute of Health, CEMA, etc. CROs are outsourcing firm vendors that undertake more precise and focused R&D function for pharmaceutical and biotech industry. They are more mistake-proof, well-experienced professionals that offer preclinical, clinical, regulatory activities for development and commercialization. ये जो है कंसिस्ट करता है, it consists of classes of full services, multinational, publicly traded firms, मिड साइज CRO जो होते हैं वो क्या है, साइड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें क्लिनिकल टीम, फिजिशियन, इन्वेस्टिगेटर और पेशेंट सपोर्ट क्लिनिकल ट्रायल के साइड पे. For the clinical trial at the site. It can render an administrative function in clinical trial with an established project. Their main function is to close the time to marketing gap through effective application of innovation, engaging in a full spectrum service for the small biotech companies. Clinical trial activities. Clinical trial industry is continuously undergoing a positive metamorphosis in India. Clinical trial process are reviewed as drug discovery rather than drug development destination alone. Multinational CROs are dominating the country's market. CROs operating in country divided into the two categories. One is the global players having their presence in India. Second, Indian players function first पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस मॉनिटरिंग मीन्स जब ड्रग मार्केट में आता है तब उसको मॉनिटर किया जाता है. सेकेंड, रेगुलेटरी सबमिशन. थर्ड इज़ द प्रोजेक्ट इनिशिएशन, कॉन्सेप्ट एंड फिजिबिलिटी. क्लिनिकल ट्रायल्स. फोर्थ, इसमें क्या क्या होगा, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, क्या वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, इनिशिएशन एंड मॉनिटरिंग, प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है, डेवलपमेंट, इन्वेस्टिगेशन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग. Fifth one is the product development and preclinical testing, prototyping, development, validation, verification. List of the CROs: Syneos Health, Paraxial, IQVIA, Medpex, LabCorp Drug Development, Icon, KCR Pharmaceutical Drug Development. Next is about the basic drug information resources. It includes primary source, secondary source, tertiary source, internet, consumer health information and other.
फर्स्ट इज़ द प्राइमरी सोर्स, ये जो है ओरिजिनल मटेरियल होता है, जिसके ऊपर दूसरे रिसर्चेस बेस्ड होते हैं। जर्नल है, ये क्या होता है, एक तो मेन टाइप होता है पब्लिकेशन का, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश किए जाते हैं। ये जो है कौन पब्लिश है, ये जो है पब्लिश किए जाते हैं, एक तो लर्न सोसाइटीज़ एंड कमर्शियल पब्लिशर्स भी पब्लिश कर सकते हैं जर्नल्स। रिसर्चर जो है सबमिट करता है आर्टिकल, टू जनरल, फिर जर्नल्स, और वो जो है रेफ़र किया जाता है एडिटर बोर्ड। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है पब्लिकेशन से पहले, जो भी एक्सपर्ट होगा उस फील्ड का। ओके, थेसिस ये जो है प्रेजेंट करता है कि एक डिटेल अकाउंट होता है रिसर्च जो भी कंडक्टेड किए उसको, मतलब जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं फाइनल ईयर में, फिर जो भी अवॉर्डिंग ऑफ दी हायर एकेडमिक डिग्रीज के लिए, ये जो है एक डिटेल अकाउंट होता है रिसर्च जो भी कंडक्टेड है। रिसर्च जो है असेस की जाती है एक्सटर्नल एग्जामिनेटर, ठीक है। हाँ, जैसे अपने कॉलेज में होता है, रिसर्च जो भी है वो असेस की जाती है एक्सटर्नल एग्जामिनेटर बिफोर द डिग्री इज अवॉर्डेड। लेटर जो है रिपोर्टेड इन एक कंडेंस फॉर्म एज ए जर्नल आर्टिकल। कॉन्फ्रेंस जो होता है, इसमें जो है हमें कॉन्फ्रेंस पेपर जो होता है वो हमें पब्लिश नहीं करना पड़ता है बिल्कुल भी, लेकिन हाँ, कई बार कई जगह पे हमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में ही पब्लिश करना पड़ता है, या कई जगह बुक के फॉर्म में, और एक दिन पहले हमें देना पड़ता है। प्री प्रिंट कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें देना पड़ता है इसका, अपने रिसर्च आर्टिकल का प्रिंट। इम्पॉर्टेंट एवेन्यू है फॉर रिपोर्टिंग, ये जो है इम्पॉर्टेंट एवेन्यू होता है जिसमें हम लोग अपने न्यू रिसर्च या डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। देन पेपर प्रेजेंट किया जाता है, मे और मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू एडिटोरियल स्क्रूनिटी। रिपोर्ट्स जो होते हैं दे कैन बी, वो जो है फ्रीली अवेलेबल होते हैं, या फिर उन्हें जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन्हीं को अवेलेबल होता है, या फिर जो लोग परचेस करते हैं उनको, या फिर उन्हें अवेलेबल होता है। जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है वो इजीली हमें इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिपोर्ट से मिलती है वो हम लोग पब्लिश कर सकते हैं जर्नल आर्टिकल में। पेटेंट जो होता है उसको पैसे दे के पेटेंट किया जाता है, जिससे कि कोई और उस चीज़ को कॉपी ना कर सके, उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ के उसकी तरह का प्रोडक्ट फिर से ना बनाया जाए। रिसर्च इंफॉर्मेशन ऑन न्यू प्रोडक्ट्स और प्रोसेस। सेकेंडरी सोर्सेज इट इंक्लूड्स द रिव्यू जर्नल्स. It starts with an annual review, gives more information about current drugs. Article reviews, summaries current literature on specific topic, means जो भी summaries होती है specific topics के ऊपर एक summaries होती है, उसके अंदर जो भी current topics है उससे related. Textbook specialized to narrow topic. Data compilation, statistical database, article indexes, database, abstracting or citation. Tertiary sources it include encyclopedia, fact books, pathfinders, internet resources. Primary resources it include meta-analysis, RCT, OT, case report. Most up-to-date information. Journals are freely and subscription पे भी हमें मिल सकते हैं. Secondary resources में क्या होता है, डायरेक्ट टू दी प्राइमरी रिसोर्सेज, मेडलाइन, पबमेड जैसे इंडेक्सिंग डेटाबेस हो गया. देन इसमें क्या क्या है, वेब ऑफ साइंस है, गूगल स्कॉलर है, एम्बेस है. देन टर्शरी में क्या होता है, जो समरी होती है प्राइमरी रिसोर्सेज का. अदर सोर्सेज में क्या हो गया, फॉर्मूलरीज हो गया, RxTS, माइक्रोमेडिक्स हो गया, लेक्सिकॉम ऑनलाइन विद AHFS, Lexicom online for dentistry, pharmacy information guideline, pharmacy subject guidelines गाइड होता है, सॉरी. ड्रग डेटाबेस, इसमें क्या होता है, कैन दैट इज CADTH कॉमन ड्रग रिव्यू. Canadian adverse drug reaction database with drug content. ड्रग प्रोडक्ट डेटाबेस. कंज्यूमर हेल्थ इंफॉर्मेशन, इसमें जो है गवर्नमेंट की दो एजेंसीज होती है जो एक साथ काम करती है, दैट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन. सेक्शन ऑन ड्रग्स एंड सप्लीमेंट्स इंक्लूड्स ब्रांड नेम एंड जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन. हेल्थ के टॉपिक्स इसमें सारे इंक्लूड होते हैं, और जो समरी होगी डिजीज़ की, जो किसी भी पेशेंट की 2 या 3 पेजेस की होती है, जिसमें ये इंक्लूड करता है उसके साइन, सिम्टम, रिस्क फैक्टर्स, दैन उसके इंसिडेंट्स कब हुआ, कितने इंसिडेंट रेट, उस एडवर्स ड्रग रिएक्शन का ट्रीटमेंट, देन उसके टेस्ट कौन से हैं वो सब.
स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मेन तो इसका जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो WHO और उपसला मॉनिटरिंग होता है। लिटरेचर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग सेफ्टी, लिटरेचर सर्वे हम लोग कर सकते हैं फॉर इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग सेफ्टी एंड फार्माकोविजिलेंस। सोर्सेज बुक्स हो सकती है, जर्नल्स हो गए, WHO UMC पब्लिकेशन, डेटा सोर्सेज लाइक ICD-10 से हमें मिल सकता है, VG सर्च, VG मेड, then scientific article providers like Medline, MBS, सिलेक्शन ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल्स, इसमें सिग्नल डिटेक्शन हो सकता है, डेटा माइनिंग, जर्नल्स कौन सी हो गए, लैंसेट हो गया, ड्रग सेफ्टी हो गया, DIG हो गया, प्रिस्क्राइब हो गया, रिएक्शन वीकली, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, WHO UMC publication, safer medicine, safer use of medicines, safer patient, Uppsala reports, newsletters है, मीन्स ये न्यूज़लेटर है। इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोविजिलेंस, सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन फार्माकोविजिलेंस। ये जो भी कंटेंट है ये मैंने स्लाइड से लिया है थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत बुक से लिया है, इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल भी नहीं रही थी। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थाट्स, देन आइडियाज़, फीलिंग, वो सब होता है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, सेंडर के पास जाएगा, इनकोड करेंगे उसको, फिर मैसेज में होगा, फिर चैनल रिसीवर, डिकोडिंग होगा, ये सब फीडबैक फिर देता है, ये सब क्या हो गया उसका वो हो गया, साइकिल होता है प्रोसेस। A complete effective communication is a message which has been tailored to its audience, has been sent out and received, has had desired effect, has generated feedback of some kind about process, has contributed to refinement of future messages. Interactive, reciprocal, continuous processes. Empathy is the ability to grasp and understand, feel what is like to be someone else, their thought and priorities, their worries and problems, their views of the world. Initially, an act of the essentially क्या है ये, अच्छा हाँ, essential essential essentially an act of mature emotional and imaginative reaching out. It comes from listening, observation, research, disposition of humility. कम्युनिकेशन का ऑडियंस, जो भी ऑडियंस है इसके अंदर एवरी ऑडियंस हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड, लाइक ब्लाइंड पीपल हो गए और पार्शियल साइटेड, तो प्रिंटेड मटेरियल्स होंगे तो वो डिफ़िकल्ट होगा कम्युनिकेशन के लिए। इलिटरेट और सेमी इलिटरेट हो गया, फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर हो गया, लिटरेट एंड एजुकेटेड, पुअरली मोटिवेटेड और लैकिंग ट्रस्ट। देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, इसमें से भी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कुछ एजुकेटेड है एंड लिटरेसी है, सीनियरिटी एंड एक्सपीरियंस, स्पेशलिटी एंड इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड मोरल है, वर्किंग मोरल, working conditions, organizational commitment to patient safety. Some of the principles of good pharmacovigilance communication: relate the message to the audience perspective, avoid comparison which trivialize the concern. थर्ड, इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, पूरी तरह से मैसेज लोगों को मिले, ये इंश्योर करना चाहिए, आधे अधूरे मैसेज पे नहीं वो होना चाहिए। Then fourth, be balanced and honest and sympathetic. Fifth, acknowledge uncertainty. Sixth, evaluate the impact of your message. Seventh, be respectful of people's rights to be concerned. Eighth, focus on specific issue that needs to be handled. Pay attention to what the audience already knows. नीड टू इम्प्रूव, वाई देर इज़ नीड टू इम्प्रूव दी कम्युनिकेशन, उसका आंसर है लाइक इम्प्रूव करना चाहिए पेशेंट केयर एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि वो इम्प्रूव करता है ना पेशेंट केयर की अंडरस्टैंडिंग है, फिर डिजीज़ जल्दी से इरेडिकेट हो गए, कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज़ को, प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ओवरकम द एक्सट्रीम डेंजर्स ऑफ फेलियर, कम्युनिकेशन के चैलेंजेस की क्या ज़रूरत है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है ये ADR एंड रिपोर्टिंग करने के लिए, उसके प्रिवेंट करेगा और रिसॉल्व करेगा किसी भी क्राइसिस को, डीलिंग विद ट्रेडिशनल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन अबाउट बेनिफिट एंड इफेक्टिवनेस रिस्क, कम्युनिकेटिंग अनसर्टिनिटी, encouraging rational drug use, adherence, qualities of modern communication, intimacy, high impact,
पीयर टू पीयर बेनिफिट्स। यूड्रा विजिलेंस क्या होता है, न्यू टॉपिक है। यूरोपियन यूनियन फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस है ये। डेटाबेस प्रोसेसिंग नेटवर्क इसका काम होता है। सपोर्ट करता है ये सिग्नल डिटेक्शन, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट को। प्रोएक्टिव रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एडवर्स रिएक्शन इन कंप्लायंस विद पर्सनल डेटा प्रोटेक्टिंग लेजिस्लेशन इन द यूरोपियन यूनियन। Third, provision of information of medicinal product authorized in European Union. Fourth is the electronic submission of information of medicinal product authorized in European Union EU. That is provision of information on investigated medicinal product. I think एक बार देखना पड़ेगा इसका, तुम लोग देख सकते हो निराली की बुक में IMP इन्वेस्टिगेटेड ही होगा मेडिसिनल प्रोडक्ट बाय द स्पॉन्सर बिफोर कंप्लीटिंग क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशन इन EU. Secure exchange processing evaluation of ICSR related to medicinal product authorized in EU and investigated medicinal products studied in clinical trials authorized in EU. Main components are Eudravigilance Gateway, Eudravigilance System, Extended Eudravigilance Medicinal क्या था medicinal product database, Eudravigilance data analysis system, then Eudravigilance Eudravigilance database management system is the core element of the Eudravigilance. It is web based information system. Features इसके कुछ features है like fully automated message processing mechanism होता है, XML based message supporting both asynchronous data inter exchange and interactive transaction, proper privacy and security measure to ensure that the principle of data integrity, accountability and availability are adhered. Third, an expertise queries and tracking capabilities both from scientific and administrative business perspective. Fourth, fully integrated organization and user management synchronous with Eudravigilance Gateway profile management. Fifth, pharmacovigilance database which built by importing and consolidating data from multiple sources includes information on the medicinal product, adverse drug reactions. Eudravigilance is based on the three tiers, taking into pharmacovigilance activities in the pre and post authorization phase. Eudravigilance database management system consists of two reporting modules, Eudravigilance clinical trial modules to facilitate electronic reporting of SUSAR and Eudravigilance post-authorization model for post-authorization of the individual case safety reports. दिस इज़ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, किस तरह से इनका फ्लो होता है शायद वो सब दे रखा है इसमें। तो ये फ्लो चार्ट तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे। थैंक यू।